फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Sharma. It's time for our live show where we'll be talking about the T20 squad this time around. But there's a twist here. We'll be talking about Virat Kohli. Why is Virat Kohli's place in India's T20 squad justified? When the T20 squad was announced for the three-match T20 series against Afghanistan, there were a lot of questions around Rohit Sharma and Virat Kohli's inclusion in the squad. But a lot of people said that, okay, we understand that Rohit Sharma got a place in the squad because he is the captain and he should get the captaincy. But why Virat Kohli? Now, there are two different views on this whole topic. Some people think that, Virat Kohli should be there in the T20 format because he has performed in this format. He's also performed really well in past year or so. And there are a few people who are saying that no, Virat Kohli shouldn't be there in this format. Well, let's hear it out from our panelists, what they have to say about it. And for that, I have with me Jamie Alter, Taos Rizvi, Kanav Pali, and Soumya Kapoor. Hello, gentlemen. Good to see you here. It's, I think, the third day we're again talking about Virat Kohli, Rohit Sharma, because that's the buzz. Everybody is so confused. Everybody is up with like a lot of questions around the inclusion of these two people in the T20 squad. But one question that's winning all the questions and the competition of all debates is that why Virat Kohli is in this squad. Jamie, why do you think Virat Kohli has been included in the squad? And does he even deserve this place or not? Okay, good evening. The answer to the first question is 4,000 runs at an average of 52 and a strike rate of 138. Those are exceptional numbers for someone who's been playing this format alongside a magnificent test career, a brilliant one-day career, captaining the team through ups and downs. On the basis of pure numbers, 4,008 runs, average 52, strike rate 137.96. These are the reasons, these are the numbers why Virat Kohli is there. We don't need to go further. Second question, does he deserve the spot? Look, on the basis of what I just said, absolutely. But I know I'm in the minority. My problem is at some point you're going to have to move beyond these players. It's not about Virat Kohli. It's not about Rohit Sharma. Every single player who's carved a niche for himself, who's left a mark on this game, at some point, वो आगे बढ़ चुके हैं गेम से या गेम उनके आगे बढ़ चुके हैं. I feel and I felt throughout the 14 months that Rohit Sharma and Virat Kohli and KL Rahul, we must also add his name, कि वो यहाँ नहीं थे. I felt this was the best time to move beyond. Virat Kohli will come back. Virat Kohli will probably score 400 runs, 350 runs in the T20 World Cup. इसमें कोई doubt नहीं है. Is it going to lead to a trophy? In my book, no. It's not. I'm not anti-Virat Kohli. I'm not anti-Rohit Sharma. कहीं ना कहीं इतिहास गवाह है कि कोई भी स्पोर्ट में आपको रीसेट बटन दबाना पड़ता है. 14 महीने तक आप इनके पास नहीं गए. कोई हो सकता है कोई बोले नहीं नहीं इनके पास नहीं गए, वो 20 के पास नहीं आए. Wherever you stand on Rohit Sharma, Virat Kohli, it's not about the numbers. You can throw the numbers at Rohit Sharma. Rohit Sharma has not crossed 200 in a single T20 World Cup. कल एक comment आया था किसी viewer से. It's a fact, right? But we know why they've been recalled. I just feel they're coming back when it's not been able to deliver. Have these two gentlemen on our screens, have they ever combined to win a World Cup for India? No. And I don't think it's going to happen at the age of 36 and 35, respectively. Okay, yes, I completely agree with you, Jamie, that based on numbers, Virat Kohli should be there in the T20 squad. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक? After the 2022 T20 World Cup, as we could see the numbers on our screen, everybody was anticipating a change in the T20 squad, especially in the T20 scheme of things. And BCCI did that to some extent. They got in new players, they got in youngsters, they gave the debut caps to a lot of them. But today we are standing on the same platform where we were
some years back, or we can say a year back, where we were saying that okay, हमें कुछ चेंज लाना है, आज भी हम उन्हीं लोगों को वापस लेकर आ रहे हैं टीम में, और आज हम बोल रहे हैं कि हमें चेंज लेकर आना है, चेंज इस तरीके का कि हमें एक ट्रॉफी लेकर आनी है जो इतने सालों में नहीं आ पाई है. So I know there are a lot of questions around Rohit Sharma and Virat Kohli. One question is कि अगर आपके पास चॉइस हो रोहित शर्मा और विराट कोहली में से, तो आप किसको इंक्लूड करेंगे? एक क्वेश्चन है, क्या आप दोनों को इंक्लूड करेंगे, आप दोनों को ही इंक्लूड नहीं करेंगे? और अगर आप इंक्लूड करेंगे तो पहले विराट कोहली को क्यों इंक्लूड करेंगे और रोहित क्यों नहीं करेंगे? Yeah. If you ask me, the first question, the answer to your first question is between Virat and Rohit, I will go for Virat. So, Okay. the experience matters. Okay, आपको एक experienced player चाहिए in going into the World Cup. See, Jamie is talking about the transition. I agree. I agree to some part of it. But ठीक है, एक World Cup 6 महीने की बात है. अगर ये भी नहीं जीतते, तो आप move on कर जाना. दोनों प्लेयर से मूव ऑन कर जाना. या जितने भी प्लेयर्स हैं, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, विराट, रोहित, इनसे आप मूव ऑन कर सकते हो. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 6 months. सेकंड, आई गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू एक्सपीरियंस. ओके, आप अगर ये लाइनअप देखें, अगर आप इसमें से रोहित और विराट दोनों को हटा दे, तो इस लाइनअप को देखो आप, कितने लोग हैं जो बहुत एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं. नॉट मच, स्पेसिफिकली इन द बैटिंग यूनिट. इस बैटिंग यूनिट में मेरे ख्याल में संजू सैमसन ने ही सबसे ज्यादा मैचेस खेले होंगे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या शुभमन गिल ने. ठीक है, तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. प्लस विराट अंडरस्टैंड्स द ही इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गेम जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं. एंड दैट वाज अ बिग दैट पाकिस्तान गेम वाज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ इट. ओके, हार्दिक एंड विराट वर टॉकिंग कंटिन्यूअसली टू ईच अदर, टेकिंग टू or discussion of taking the game deep to the last over. Probably everything is okay. हार्दिक ने बहुत बात करा, लेकिन एंड तक जो गया वो विराट था. आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हार्दिक, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम अश्विन इवन, क्योंकि अश्विन ने जो बॉल लीव करा वो बहुत बड़ा बॉल था, वो जो वाइड छोड़ा था उन्होंने. दैट टेक्स अ लॉट ऑफ कंपोजर. लेकिन उस मैच को जहां तक लेकर गए वो विराट कोहली थे. ठीक है, 3 नंबर वर्ल्ड कप के लिए इज द मोस्ट सूटेड. अगर कोई प्लेयर है तो वो ये हैं. फर्स्ट, इनके रन्स. सेकंड, जो इनके नंबर्स हैं इन T20 वर्ल्ड कप. थर्ड, द काइंड ऑफ चेजर ही इज. ओके, फोर्थ, एक्सपीरियंस. एक एक्सपीरियंस बंदा आपको उस लाइनअप में चाहिए, स्पेशली जब हार्दिक पांड्या ऑलमोस्ट इंजरी प्रोन हो चुके हैं. नाउ सूर्य कुमार यादव इज आल्सो स्ट्रगलिंग विद he has also become a bit injury prone. 6 महीने पहले इतना बड़ा he has had this injury layoff. Okay. उस रिगार्ड्स में आपको एक प्लेयर चाहिए जो आपको जो एक्सपीरियंस हो, जिसके पास बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलने का एक्सपीरियंस हो, सो दैट he can lead the pack, not lead as in be the captain, but lead the pack. So that is what my take is on among the choices. If I have between Virat and Rohit, I would go for Virat. क्योंकि आपको Okay, so you mean that even just adding one thing, 3 नंबर के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है उसके बाद. And have a clarity. Just ask him. You don't need to be the anchor. You have to go there and express yourself. आपको एंकरिंग नहीं, एंकर हो गया. T20 में एंकर is equal to nil. उसकी कोई जरूरत नहीं. Okay, so you mean that even if this team is deciding to go through a transition phase and include all the youngsters, Virat Kohli should be there in the team because he will bring that balance to the team the way he has played in past years or so. Taus, what do you think? Should be there, should not be there. I mean, ये बहस तो थी नहीं पहले से. Like we have been talking about this Virat and Rohit, whether they are going to be there, whether they should be there. तो हम तो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ये लोग दोनों वापस आएंगे T20 क्रिकेट में. जिस तरह से after the World Cup everything happened, how these guys were given charge. In fact, last 1 year भाई T20 क्रिकेट को हम लोग ने सोचा ये अलविदा कह दिया है. 2020 वर्ल्ड कप, 2022 वर्ल्ड कप हो गया, इन्होंने अचीव नहीं किया. 2023 हो गया, बस अब नया देखना है. But then suddenly you see, I mean, again I will be talking about the vision. Where are we heading right now? हमारा गोल क्या है? BCCI का गोल क्या है? सेलेक्टर्स का गोल क्या है? अभी I mean we keep going back. यानी इसका मतलब है हम अजिंक्य राणे पुजारा के पास वापस जाते रहेंगे टेस्ट क्रिकेट में भी. So we are going to keep going back every now and then, whether I mean आपको जब जरूरत पड़ेगी. मतलब आपको आपके फ्यूचर पे भरोसा नहीं है, आपके फ्यूचर पे ट्रस्ट नहीं है, आपको अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है, या आपने इतना goof up किया है कि आपके पास टैलेंट जो पूल एक टाइम पे इतना बड़ा हुआ करता था आज श्रिंक होते हुए नजर आ रहा है क्योंकि आपको पुराने लोगों के पास जाने की जरूरत पड़ रही, which is I mean obvious, which is
स्ट्रेट दिखता है हमको यहाँ पे. वी हैवंट वर्क एट ऑल. बीसीसीआई भी, मतलब बीसीसीआई और मे बी द सिलेक्टर्स, दे डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर विजन. जरूरत तो देखिए, जरूरत के हिसाब से इस वक्त देखेंगे कि मतलब आई मीन आप अगर ये देखेंगे कि विराट और रोहित को बिठाना है, तो आप बाकी लोग जो जस्टिफाई होगा उनके लिए. आर वी प्लेइंग फॉर जस्टिस और आर वी प्लेइंग फॉर सम, और आर वी डेस्परेट टू विन दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड कप? क्योंकि हमने 2023 का वर्ल्ड कप हाथ को आया मुंह ना लगा गवा दिया. आई मीन इजीली गवा दिया. इनकी जरूरत देखिए, आई मीन जेमी भाई, ही वाज टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स. डेफिनेटली ब्यूटीफुल रिकॉर्ड्स. वो रोहित शर्मा टॉप 10 स्कोर, टॉप 2 स्कोरर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट. विराट कोहली अगेन 296 रन इन द लास्ट 2022 वर्ल्ड कप. अगेन आई मीन वो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करते. द फैक्ट हियर इज, will he be able to play that match winning knocks every now, like every second or third match? देखिए रोहित शर्मा अगेन, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा. रोहित शर्मा शुरुआत अच्छी दे रहे हैं, और T20 क्रिकेट में आप पास परफॉर्मेंसेस पे, रेपुटेशन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, और वो एक्सपेक्ट कर नहीं कर सकते जीत सकते आप जाके. वो पास परफॉर्मेंस में आपने दिया था और वो डिलीवर नहीं कर सकते. कंसिस्टेंसी वो आई मीन वो नहीं कर सकती, आपको गारंटी नहीं दे सकती T20 क्रिकेट में. जो आपको शायद आईपीएल में मिल जाता है, क्योंकि आप एक ब्रांड रहते हैं तो आपको वो ब्रांड आगे लेके जा सकते हो. बट T20 क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. रोहित का भी नाम इसलिए हम यहाँ पर फैक्टर कर रहे हैं कि रोहित शर्मा हैज कम इनटू फॉर्म by showing it in the World Cup 2020-23, the way he gave the stats. तो वो यकीन आया है. वो definitely विराट कोहली was the top scorer, Yeah. but the way he scored those runs, I mean, still leaves a question mark. I mean, आप 50 ओवर क्रिकेट में एटलीस्ट वो स्टाइल नहीं खेल सकते, बट जब आप T20 क्रिकेट की बात आती है तो आपको ये अग्रेसिव स्टाइल नहीं दिखेगा. ऑब्वियसली विराट विल चेंज हिज गेम. तो आई मीन देखिए, आपको जगह मिली है तो आपको अपनी गेम चेंज करनी पड़ेगी. जस्टिफाइड है या नहीं है, आप डेफिनेटली जस्टिफाइड हो आपकी जगह, बट बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं. क्या होगा वो यंगस्टर्स का जो परफॉर्म किए, आपका विजन क्या है, गोल क्या है, कि आपको 2022 वर्ल्ड कप जीतना है, 2024 वर्ल्ड कप जीतना है, क्योंकि आपने 2023 वर्ल्ड कप के लिए नहीं, आप हार गए. तो एवरी एस्पेक्ट, आई मीन यू हैव टू लुक एट अ फ्रेशर. रोहित शर्मा 2007 का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, उनके लिए जस्टिफाइड है. 2023 के लिए डेस्परेट थे. तो और विराट कोहली 2007 T20 वर्ल्ड कप में नहीं जीते, तो he would be desperate now to win 2024 T20 World Cup. He has won the 2011 World Cup. तो सवाल बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे, मगर इनका जवाब वो दोनों को ही देना पड़ेगा. क्या ये जस्टिफाई अफगानिस्तान सीरीज के सामने, या अफगानिस्तान के सामने मुझे लगता है वो क्लिक हो जाएंगे. छोटी टीम है, आराम से स्कोर करके जाएंगे. बट वो क्या वो पेस पे स्कोर करेंगे, क्या वो जस्टिफाई करेंगे अपना स्पॉट्स, वो एक मसला रहेगा, देखने लायक रहेगा. अगर नहीं भी किया तो मुझे लगता है गारंटीड इनकी जगह, क्योंकि ये आगे कमबैक कर लिया और इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई ना नहीं बोल सकता है. ये 2024 के वर्ल्ड कप में देख सकते हैं. बट देन अगेन आपको आपकी गेम चेंज करना पड़ेगा. रोहित विल हैव Yeah. टू कंटिन्यू विथ 50 ओवर वर्ल्ड कप फॉर्म, एंड ही विल हैव टू बी मच मोर फास्टर. डेफिनेटली यू नीड एक्सपीरियंस इन वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका, बिकॉज द विकेट्स आर गोइंग टू बी स्लो. जो यंगस्टर्स Okay. नहीं खेल पाएंगे क्योंकि स्लो रहती है विकेट, आसान नहीं रहता. बट देन उनको उतने ही ज्यादा पेस पे खेलना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और वो जीत के आना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आपको ले लिया और आपके रेपुटेशन के लिए और आप एंजॉय करके आ गए वेस्ट इंडीज और अमेरिका. आपको नहीं, जीतना पड़ेगा. आप गारंटी दे रहे हो आप जिताओगे तो वर्ल्ड कप जाओ, नहीं दे रहे हो तो मत जाओ. गारंटी दे रहे हो 100%. जस्ट एडिंग वन थिंग टू इट, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जीत भी रहे हो अगर, तो भी the team management should move on after that in at least T20s from Virat, Rohit and probably KL Rahul अगर वो आते भी हैं, आप मूव Okay. ऑन कर. लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टिल दिस वर्ल्ड कप. या देखिए सर, एक सेकंड 2007 में अगर सचिन और लक्ष्मण या द्रविड़ जो अगर ना नहीं बोलते तो यंगस्टर्स को मौका मिलता है. तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं रहती किसी की. तो आप फॉरवर्ड थिंकिंग, आपको खुद इंडिविजुअली फॉरवर्ड थिंकिंग होना पड़ेगा रादर देन सिलेक्टर्स को. आप क्योंकि ये सिलेक्टर्स तो ऑब्वियसली आप बड़े प्लेयर हो तो आपको जस्टिफाई करेंगे, आपको Okay. लेना ही पड़ेगा. आपको खुद इंडिया के Taus, लिए खेलना I'll go to पड़ेगा. Kanav first and then I'll come back to you guys. Soumya and Taus, I'll come back to you. Kanav, यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई हैं, सबने अपने अपने points रखे हैं. 2-3 key pointers from all the opinions that our panelists shared. One is obviously Kohli has phenomenal numbers. He has done really good in all the formats and in T20 cricket as well. Second thing that Taus mentioned that
we'll have to see how he performs in the upcoming series. But personally, I don't think so that it'll be fair for the youngsters who have performed in n number of series throughout the year. Because even if Kohli performs in two matches, let's say two matches of this three-match T20 series, his position will be cemented, and his position will not be cemented on the basis of these two matches or three matches. His position is there in the team. The team has already given a signal that we are taking these two people in this T20 squad because they will be there in the T20 World Cup 2024 as well. If you see what people are thinking, they by now know that these two cricketers will already be there in the T20 squad for the T20 World Cup. That's second point. The third point is that Soumya was sharing that, we can go through the transition phase, we can bring in youngsters, but Virat Kohli should be there. And if India wants to get over with these players, or they want to change the team, they can decide on that after the T20 World Cup. Do you think even then, like keeping all these pointers in mind, do you think that all these pointers justify that Kohli should be there in this team? Because from this side, it doesn't seem that this is justice to the youngsters who have played throughout the year. They have won you matches. They've put you as the one of the best teams in the T20 format. This isn't justice with the youngsters. Well, see, Ramya, if you wanted Virat Kohli to be the center point during the transition, he should have played all the T20Is in the last year. Exactly. Transition doesn't happen in World Cups. World Cup में आके वो एज अ सीनियर ट्रांजिशन में हेल्प नहीं कर सकते. अगर उनको ट्रांजिशन में हेल्प करनी है मिडिल ऑर्डर में रह के, तो आपको एक साल पूरा T20 खेलना चाहिए था. तो दैट पॉइंट इज इररिलेवेंट हियर. टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप इटसेल्फ, देर आर सब सेक्शंस टू इट. जो सबसे ऊपर पॉइंट है दैट इज दोनों की जगह नहीं बनती थी T20 वर्ल्ड कप में, बिकॉज यू शुड हैव गॉन विद द यंग स्क्वाड. आप एक साल यंग Yeah. स्क्वाड से खेले हैं, आपने एक टीम बनाई है, एक बैटिंग लाइनअप को एक साथ खिलाया है, जेलअप करवाया है. देयर इज नो यूज ऑफ दैट नाउ, बिकॉज जो दो सीनियर प्लेयर्स एक साल से नहीं खेले वो बीच में आ गए. अब इसका सेकंड सब सेक्शन ये है कि किसको लाएंगे. विराट या रोहित दोनों को लाएंगे क्या? एक को लाना चाहिए. विराट के स्टैट्स अच्छे हैं, रोहित का फॉर्म अच्छा है. तीसरा सबसेक्शन इज कि एक आएगा तो दूसरा आएगा ही आएगा. दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रूथ इंडियन क्रिकेट में, कि एक आएगा तो दूसरा आएगा ही आएगा. अब दोनों में से किसको प्रेफर करना चाहिए पहले खेलेंगे? तो माय पर्सनल टेक इज विराट कोहली. ए स्टैट्स, विराट कोहली के स्टैट्स बैक्स हिमसेल्फ. जो हम नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इट शोज व्हाट विराट कोहली हैज डन सो फार इन T20s, be it IPL, be it World Cups. Second, the World Cup is in West Indies and USA. सबसे पहले वेस्ट इंडीज, स्लो पिचेस, यू नीड एन एक्सपीरियंस कैंपेनर, बी इट रोहित, बी इट विराट. आई बिलीव विराट एट नंबर 3 कैन बी दैट प्लेयर. बट द बिगेस्ट पॉइंट इज यूएसए. हमारे पहले 4-5 मैच यूएसए में, एंड यूएसए इज एन एलियन कंडीशन. वहां पे इतना क्रिकेट नहीं खेला गया है, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स ने. विराट ने भी नहीं खेला. बट व्हेन अ टीम गोज इनटू एलियन कंडीशंस, वहां पे एक्सपीरियंस प्लेयर बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सबसे पहले उन कंडीशंस को रीड करके ग्रैस्प कर पाते हैं. यंगस्टर्स को कभी कभार टाइम लगता है, क्योंकि विराट कोहली ने इतनी क्रिकेट खेल ली है और इतनी सक्सेसफुल क्रिकेट खेल ली है T20s में. ही नोज हाउ टू रीड पिच फास्ट, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे टेम्पो करना है. उनके गेम प्ले में सवाल है. स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन स्पेशली, आई स्टिल बिलीव पेसर्स को वो अभी मार सकते हैं बहुत. स्ट्राइक रेट, हाई स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं. माय कंसर्न इज स्पिनर्स. जब स्पिनर्स आ जाएंगे, और वो बैटिंग भी ऐसी पोजीशन पे करते हैं, जब स्पिनर्स आएंगे नंबर 3, वो आते हैं 8वें 9वें ओवर में, तो वहां स्पिनर्स आना, तो दैट इज अ मेजर कंसर्न फॉर मी. बट द बॉटम लाइन बीइंग, दोनों प्लेयर्स की इस वर्ल्ड कप में कोई जगह नहीं बनती थी. अगर बनती थी तो उनको इस पूरे साल T20s खेलने चाहिए थे. दिस इज वेरी कन्वीनियंट, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय माय पॉइंट. दिस इज बिकॉज ऑफ डेस्परेशन. 2023 का वर्ल्ड कप वो जीत जाते तो वो ये वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे होते. दैट वाज हंगर, दिस इज डेस्परेशन. अब वो क्योंकि एक ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने एक T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीती, क्योंकि रोहित शर्मा ने 2007 के बाद कोई ट्रॉफी नहीं जीती, दे वांट टू गो and exit T20 with a trophy, which ठीक है, personally it's okay, you are thinking of giving India a trophy, but at the bottom line of all this is कि youngsters की कॉस्ट पे हो रहा है. वो यंगस्टर्स के जो पोजीशन, जो उन्होंने पूरे साल मेहनत की है, उसके कॉस्ट पे हो रहा है. तो दिस इज द बॉटम लाइन. उसके अलावा दोनों में से आई विल स्टिल बैक विराट, बिकॉज विराट गिव्स मी दैट एश्योरेंस कि ए जब अरेस्ट कोलैप्स होगा तो विराट नोज हाउ टू अरेस्ट दैट कोलैप्स. वी हैव सीन इन MCG, जो उन्होंने इनिंग्स खेली, उनको वो प्रेशर सोक करना आता है, और वर्ल्ड कप में प्रेशर आता है, वो सोक कर लेंगे. बट इफ ही वांट्स टू सक्सीड, अगेन
someone said here कि Virat will score a lot of runs in this World Cup. Agreed. But कितनी पेस पे वो रन स्कोर होंगे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि विराट कोहली स्कोरिंग 200 300 इन वर्ल्ड कप्स is not that we have not seen that before, but that has not helped us before. So in order Exactly. for us to get a trophy via his runs, he needs to score them quickly, and obviously all the other batters have to tag along. रोहित खेल रहे हैं तो उनको मारने पड़ेंगे. ऐसा नहीं होगा 2 छक्के मारे तीसरी बॉल पे आउट होके रोहित शर्मा कहे ये मेरी गेम प्लान, ये मेरा गेम प्लान था, मैंने हर बॉल पे मारना था, मैं उसके चक्कर में आउट हो गया, तो यू कांट ब्लेम हिम. नो, यू आर ए सीनियर प्लेयर. अगर आपका गेम प्लान एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है तो आपको कम से कम 30-40 रन मारने पड़ेंगे. 3 बॉल Yeah. पे 3 छक्के मार के चौथी बॉल पे आउट होके यू कांट यूज दैट कि मेरा गेम प्लान था. तो अब दोनों सीनियर्स ने क्योंकि जिम्मेदारी ले ली है कि वी वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप, दे विल हैव टू शो कि व्हाई दे आर द फिट, why they are a perfect fit in this 11, and why are the people who can win India this trophy. Well, winning this trophy is a far-fetched thought, I think. So it's like, way too far for Team India right now. But I completely agree with you, Kanav, when you talk about experience and all those pointers that you mentioned, because Virat Kohli has that experience. But Jamie, I remember that yesterday when we were doing this live session, I asked a question to all our panelists that if given a choice between Rohit and Virat, who would you take in to the T20 squad for the World Cup? You said Rohit Sharma. Why so? Power play. I'm not going to change my opinion in 24 hours. I'm only picking him because of the power play, because he's going to struggle from over 7 onwards just as much as Virat Kohli is. It's going to mention spinners coming on in the ninth over. In the West Indies, you're going to see spinners opening the bowling. So they're going to struggle, right? I don't want to see either of them. I agree with Kanav. 14 months के बाद आपने इनको ऐसे ही बुलाया या उन्होंने दरगाह में नॉक किया, हमको ले लो जो भी है. But between the two, I will still go for because the best T20 batsman India's ever produced is going to come back, and that is Suryakumar Yadav. He knows Yeah. Virat Kohli has played 3 T20s in the West Indies. Those are 11, those are 17, those are 19. So take that experience and throw it out the window on the flight to the West Indies. Suryakumar Yadav has played the last 2 tours there. He's got very good numbers. So when your best batsman is being shunted down to number 4, and while moving down, his skill is reduced significantly. He has hundreds in 4 overseas. Rohit Sharma, only because a gun to There's my some head, network I had issue. to pick one name. He's going to be using the power play. अगर Rohit Sharma power play को cash in नहीं कर पाए, that pressure is going to add up on Virat Kohli, on Sky, on Hardik, जो भी आएगा, right? So that's why I'm saying, look, people will say, यार ये बहुत anti-Kohli, anti-Rohit है. These two guys 2 years ago could not do it. Are you saying 2 years later, with age, fatigue, they're going to do it now? I don't see it, but I know that 90% of Indian cricket fans, all they remember from that disastrous T20 World Cup 2 years ago was Virat Kohli getting the player of the tournament. And that is the crux of my anger and my discussion yesterday. If fans ko ghanta farak padta hai, Chetan was asking all of us, can India afford to lose? Of course they can afford to lose. They've afforded to lose 7 T20 World Cups in 14 years. They'll lose one more. Kya farak padta hai? Because the common man just wants to see player of the tournament, best bowler, best batsman. So again, like I said at the start of this live session, आंकड़े के basis पर they should Virat Kohli के आसपास कोई नहीं है when it comes to experience, when it comes to the Exactly. volume of runs. But when it didn't work in 12, when it didn't work in 14, when it didn't work in 16, when it didn't work in 21, when it didn't work in 22, is it going to work at the age of 36? I have my reservations. Okay. Soumya, will it work in 2024? That's a big question. Along with that, from 2022 till now, everybody remembers just that knock. Obviously, what Virat Kohli did against Pakistan was phenomenal. And if you ask me, I don't think so anybody other than Virat Kohli could have done that. It was magical. But that was once in a lifetime kind of innings. We can't expect Virat Kohli to do that in each and every match, in each and every tournament, right? So, as Jamie said, that it didn't come from him in last 7 tournaments, in last 7 World Cups. Will it come in 2024? What's the guarantee? Okay. Uh, so first of all, you need that kind of a knock
वंस इन अ ब्लू मून, ऑफ कोर्स इस तरीके का नॉक आपको एक ही बार चाहिए, वो आ गया, ठीक है। 2016 we all know what happened, 190 plus on the board against West Indies and we lost the game, right? 2014 again we knew, ठीक है, I'm not blaming anyone, but एक एंड पे आप चोक कर गए। 2021 a lot of things happened, 22 again yes we fumbled। क्रिकेट और स्पोर्ट्स इन टोटल कोई गारंटी के साथ तो नहीं आ सकता। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंसेस वी हैव, जब आपको यही चीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी हुई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट वाज 2014 व्हेन ही स्कोर्ड एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ रन्स 82, दैट जो एमएस ने उनको विनिंग स्ट्रोक दिया था। सो यू नो जब इंस्टेंसेस हैं आपके पास मैच विनिंग नॉक्स की, तो आप उन्हीं के बेसिस पे जाओगे ना। आप यंगस्टर्स की बात करते हो, यंगस्टर्स की बात क्यों कर रहे हैं हम, रिंकू की बात इतनी क्यों करते हैं? Because we have seen him, because we have seen him not struggling under pressure, not losing his composure, not losing his calm। वो 5 छक्के मारने का दम रखता है, ठीक है, उसने अपने टीममेट को, यूपी टीममेट को मारा, लेकिन एट ऑन अ स्टेज जहाँ पे आपको 50,000 बंदा देख रहा है, सो हम जब बात करते हैं किसी एक्सपीरियंस की, कंपोजर की, किसी इंस्टेंस की, तो हम तभी करते हैं ना जब ऐसा हुआ है। एंड आउट ऑफ दिस लॉट, फॉर मी, more than Rohit, only Virat is someone who can do this। Coming to another point, जो ताउस भाई ने एक चीज बोली कि 2007 में अगर सचिन, लक्ष्मण, द्रविड़ स्टेप आउट नहीं करते, स्टेप असाइड नहीं करते, तो क्या यंगस्टर्स को एक वो मौका मिलता? नहीं मिलता, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आप उस लाइनअप को देखो, ताउस भाई, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, एमएस, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, they had played a lot of cricket already। Yuvraj Singh, Harbhajan Singh, Virender Sehwag were 250 ODI World Cups old till then, and a knockout, two knockouts, two knockout trophy। उन्होंने बहुत आईसीसी ट्रॉफीज खेल लिए थे तब तक। सो आपको जो ट्रांजिशन लाना था, वो लाना था रोहित को इंक्लूड करके, प्रॉब्ली श्रीसंत को इंक्लूड करके। रॉबिन उथावे भी ठीक ठाक क्रिकेट तब तक खेल चुके थे, यूसुफ पठान, इरफान पठान, इनके लिए आपको, इरफान भी बहुत खेल चुके थे, सॉरी फॉर दैट मैटर, यूसुफ को लाके। तो आपको जो यंगस्टर्स को टीम में लाना था, स्कीम ऑफ थिंग्स में लाना था, वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के आसपास ही आप लेकर आए। ऐसा नहीं था कि सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हट गए और आपने एक नई टीम एमएस को बना के दी थी, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो आप सारे प्लेयर्स को हटा के एक यंग टीम लेकर जाओ, नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, ये डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन नॉट एवरीवन। अगर आप इस स्क्वाड को देखो, आप रोहित और विराट, एज आई हैव बीन सेइंग, इफ आई कैन हैव द स्क्वाड अगेन अगेंस्ट अफगानिस्तान, रोहित और विराट को हटा के आप देखिए एक्सपीरियंस को। सुंदर हैज बीन एन इंजरी प्रोन प्लेयर, जायसवाल इज यंग, शुभमन इज आउट ऑफ टच, जितेश ने अभी डेब्यू करा है, संजू सैमसन को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बॉलिंग यूनिट आप देखिए, अर्शदीप के अलावा और कुलदीप के अलावा, आई मीन हाउ कैन यू जस्ट include all the youngsters and ask the experienced ones to step aside? अब आपके experienced players हैं ही 2-3 जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चल सकते हैं, तो इसमें उन प्लेयर्स की गलती नहीं है। नहीं, but सौम्य, देन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे साल लेनी चाहिए थी ना। इफ यू वांट टू हेल्प द टीम टू ट्रांजिट टू यंगस्टर्स, But how will you do that? 1 second, Tanab, how will you do that? You had a South Africa series, Test series, you had WTC at stake, WTC points at stake. उससे पहले वर्ल्ड कप था, उससे पहले आया, उसके बीच में आया क्या, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती थी। no, but then again you can't और do ऐसा the transition in वर्ल्ड कप। That's what I'm saying। वर्ल्ड कप के बाद ये नहीं खेलेंगे T20, ये भी डन है। वर्ल्ड कप से पहले ये खेलेंगे, ये भी डन है। तो बेसिकली यू आर यूजिंग अ वर्ल्ड कप टू ट्रांजिशन। No, it's not the transition। The World Cup is the biggest tournament you have ना, वो आपको जीतना है। तो आप सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को नहीं हटा के जीतोगे। ओके, आप हटा दो रोहित शर्मा, विराट कोहली, दोनों को हटा दो फॉर दैट मैटर। आप सूर्य को 3 नंबर खिला दोगे, ठीक है, यू कैन प्ले एट नंबर 3, ही हैज स्कोर्ड 100, ही स्कोर्ड व्हाट, 2 कपल ऑफ हंड्रेड्स देयर, अग्री, ग्रेट नंबर्स, फाइन। लेकिन उसके अलावा आप गारंटी नहीं ले सकते ना। आप कैसे रोहित नहीं, रोहित विराट ने 6 वर्ल्ड कप नहीं भी तो जिताया, वहां भी गारंटी नहीं ले सकते। तो माइट एज वेल गो विद द यंगस्टर्स। इट्स नॉट दैट रोहित विराट आपको 3 वर्ल्ड कप T20 जिता के आ रहे हैं एंड वी आर टेकिंग रिस्क बाय सेंडिंग यंगस्टर्स। एक्सपीरियंस मैटर्स, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एक्सपीरियंस मैटर्स। मैं ये कह रहा हूं कि आप 11 के 11 नए लड़के नहीं डाल सकते।
because it will also which means कि समय clear message, which means कि आपने bilateral series में आपको experience नहीं चाहिए था, तब आप ठीक थे कि चलो भाई जो भी youngsters हैं हम उनको include कर लेते हैं. हमने अपने 2023 में India played against Sri Lanka, India played against New Zealand. I'm talking about the T20 format. India played against Australia, India played against South Africa, and एशियन गेम्स वो हटा देते हैं, एशियन गेम्स हम हटा देते हैं बिकॉज आपको अपनी दूसरी टीम भेजनी थी. एंड हाँ, और आपने वर्ल्ड कप के साथ कोइंसाइड है, और बात ये है कि आपको खिलवानी पड़ी क्योंकि आपको पता था कि हम वही टीम एशियन गेम्स में नहीं भेज सकते और वही टीम फिर आप वर्ल्ड कप में नहीं खेल सकते, तो आपको पहले से ही पता था कि हमें दूसरी टीम खिलवाने पड़ जाएगी वहां पे. उसके अलावा आपने श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आपने 4 कंट्रीज के साथ खेला. 4 कंट्रीज के प्लेयर्स जहां जहां पे थे, हम ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स को हटा देते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी वो वर्ल्ड कप के तुरंत बाद आई, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में मेन प्लेयर्स रखे थे. वो बात अलग है कि ऑस्ट्रेलिया जब ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गया तो उनके जो मेन प्लेयर्स थे दे फ्लू बैक एंड दे कॉल्ड इन द फ्रेश प्लेयर्स, द डेब्यूटेंट्स फॉर दैट मैटर. Now, the point is कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा 2022 के बाद 2024 का वर्ल्ड कप अपने दिमाग में लेके चल रहे थे तो एटलीस्ट एक सीरीज तो खेली होती, एटलीस्ट वन. ओके, तो ओके, my question is to my my question is to Taos on that only, because I want to know. Go ahead. Yeah, Taos. हाँ, Taos, the question here is कि आपने कुछ भी T20 नहीं खेला तो आप ये भी मत खेलते, फिर आप डायरेक्टली आते T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि आपकी पोजीशन तो टीम में वैसे भी बनी रही है, क्योंकि आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि हमें T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलना है तो आपके ये 3 मैच खेलने से कुछ नहीं बदलने वाला. योर numbers or your position will not cement on the basis of 3 matches. You have done a lot in the world of cricket, right? But अगर आपको T20 में उतनी sincerity दिखानी थी तो आपने एक साल में एटलीस्ट 1 या 2 सीरीज खेली होती ना. नहीं, उनको लग रहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो खत्म हो जाएगा 2023 वर्ल्ड कप, उसके बाद आई विल लुक फॉरवर्ड चैंपियंस ट्रॉफी. Which means that 2024 was never a priority for them, was never a thing for them. नहीं था. In fact, this is so unfair. Okay. Somebody like a Shreyas Iyer who plays spin so well and who's going to play a crucial role in West Indies, who could have played a crucial role in West Indies, उसको ड्रॉप करना पड़ा अफगानिस्तान सीरीज में. यानी आपको ये भी भरोसा नहीं कि एक सीनियर प्लेयर सौम्या, हार्दिक पांड्या रिकवर नहीं होने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए. आपको सूर्य कुमार यादव पे भरोसा नहीं है, आपको भरोसा नहीं है श्रेयस अय्यर पे, आपको भरोसा नहीं है रिंकू सिंह पे, आपको ये दोनों बंदे पे भरोसा है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं वर्ल्ड कप को लेकर या इंडिविजुअल. आप जब मर्जी चाहे आप रिटर्न कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे एग्जिट कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे आपको T20 खेलना है क्रिकेट, जब मर्जी से आपको ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, जब मर्जी चाहे टेस्ट मैचेस में आपको आना है. तो आप एज टीम इंडिया प्लेयर जाके खेलना चाह रहे हैं कि या एज इंडिविजुअल ब्रांड्स या रेपुटेशन रख के जो इतने साल करते हुए आए हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका विजन क्या है? जैसे एज अ क्रिकेटर या एज अ सीनियर प्लेयर, क्रिकेटर तो छोड़िए, जब क्रिकेटर शुरुआत करता है तो वो उसका गोल रहता है और हर बार एक नया गोल रहता है, हर साल एक नया गोल रहता है, हर सीरीज हर मैच एक नया गोल. बट आपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया तो आपका रोल सिर्फ सीरीज को लेकर या इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को लेकर नहीं होना चाहिए. यहाँ पर आपको लीड करना चाहिए एज ए प्लेयर, एक साया, एक ट्री शैडो जो यंगस्टर्स को एक शैडो दिखा दे, एक गाइड बन के रहे. जो आपने रोल बिल्कुल भी प्ले नहीं किया अनफॉर्चुनेटली. आपने अपने बारे में ही सोचा है, चाहे वो इंडिविजुअल रन हो या चाहे आपके 50 सेंचुरीज हो. सॉरी बट वी सेलिब्रेटेड एंड डेफिनेटली, और हम बहुत खुश. बट देन आपका गोल क्या रहा? आपका उतना इंपॉर्टेंट गोल था फाइनल 2023 वर्ल्ड कप, आपको खड़े रह के जिताना चाहिए था यार वो मैच, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी ऑस्ट्रेलिया हो. आपका क्या I mean, come on यार, you were thinking, you guys have been thinking about yourself यार. आप टीम के बारे में कब सोचे? It's convenient. It's very convenient of both the seniors is all I am saying. कि रोहित शर्मा अगर एक वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करना चाहते हैं तो क्या उन्होंने कभी रिंकू सिंह को लीड किया है T20I में? क्या उन्होंने जायसवाल को कभी T20I में लीड किया है? आप एक कैप्टन हो, आपको अपने प्लेयर्स को एक फॉर्मेट में जानना जरूरी है. आप एक पूरे साल बैठ के फिर वर्ल्ड कप में आके कि आई लीड दीज यंगस्टर्स नाउ, नो यू डोंट नो दीज यंगस्टर्स. सूर्य कुमार यादव ने इनको लीड किया है, हार्दिक पांड्या ने इनको एक हद तक लीड किया है, इज ऑल आई एम सेइंग. और जो सौम्या की बात थी कि विराट और रोहित अगर हटा देंगे तो
एक्सपीरियंस नहीं बचेगा नहीं. यू हैव श्रेयस अय्यर, यू हैव सूर्य कुमार यादव, Okay. यू हैव हार्दिक पांड्या, यू हैव जसप्रीत बुमराह, यू हैव जडेजा और अक्षर, एंड फॉर दैट मैटर इवन शुभमन गिल. ये यंग नहीं है, ये बच्चे नहीं है, ये एक्सपीरियंस है. यंग कौन है? रिंकू जायसवाल. तो इतनी डेस्परेशन हमें नहीं थी कि रोहित विराट का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टीम बिल्कुल ही एक यंग स्क्वाड जा रहा है वेस्ट इंडीज. नहीं, इनको आप चांस दे सकते थे. Why are we talking about Hardik and Surya ना? तो इंजरी की वजह से They are not there, na? They're not अरे there. आई एम टॉकिंग The अबाउट द whole वर्ल्ड point कप कि अगर ये दोनों सीनियर, आपने कहा ना सौम्य कि वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे तो एकदम 11 के 11 बच्चे थोड़ी खिला देंगे. इज ऑल आई एम सेइंग कि 11 बिकॉज ऑफ डेजिग्नेटेड कैप्टन जो अब कैप्टन हो सकते हैं, ही इज इंजरी प्रोन ना. उनको हर तीन ओवर के बाद इंजरी हो जाती है They भाई. could have gone with Shreyas Iyer also. They had you an have option, Shreyas right? Iyer, you have Bumrah, you have They could have. still have senior Okay. players. Is all I'm Seriously saying. telling me, Okay, let me quickly ask this. Sorry. Okay, let me quickly ask this to Jamie and Taus. Jamie, Shreyas Iyer, isn't he a good option to be the captain of the Indian team in T20 format? So look, I've said this before. What the IPL has done, it's done a lot of things, good and bad. What it has done to my views, Ramya, is it has reduced that gap जो पहले Indian cricket में था और top team से, right? I think we've discussed. I think also Chetan or maybe Tawz bhai had mentioned कि हाँ अच्छा है कि आप अंतरराष्ट्रीय bowler से खेल रहे हो, लेकिन आपको पता है कि दो तीन थोड़े uncapped, lesser skilled domestic bowlers आएंगे, ये fact है. But the IPL is widely regarded as the best, the greatest, जहाँ पे विश्व के best, पाकिस्तान को छोड़ के विश्व के best players आके खेलते हैं, right? So I believe someone who's played 4 seasons of the IPL, competitive IPL, and who's made the knockouts, he has more than enough experience to go to the T20 World Cup. ठीक है? Experience, like I keep saying, what has experience got you? Gun freaking ta, right? It has got you nothing. I want to ask Soumya, would you be happy with Virat Kohli 300 runs or India winning the trophy? No. So Correct. But my point is 90% of India does not care whether India win the World Cup, which is why, like I said yesterday, 4 days, मात्र 4 दिन उस November 19th के दिल टूटने के बाद साला गुवाहाटी का स्टेडियम पैक था, क्योंकि इनको स्टार्स देखना है. We like our stars. We have moved so far on from the team. Can you imagine with the money, with the depth, गली गली में साला इस देश में टैलेंट है. 11 साल हो गए, किसी को घंटा फर्क पड़ रहा है हमारे सिवाय जो यहाँ बैठ के दिन बात करते हैं. बिकॉज यार 50 सेंचुरी तो मार दिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो बन गया, राइट? This is my problem. Right? So when you know कि इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, you may as well send someone else, right? Shreyas Iyer has led Mumbai, he's led Delhi franchises, right? Shubman Gill is going to lead KKR. Even Jaiswal is 3 IPL seasons old. He's done more in 1 season than Rohit the batsman has done in 6. So there's enough signs. और यार इनको भेजो यार. What's the worst they're going to do? यार ये बच्चे हार के आएंगे, तो ये जो सीनियर प्लेयर ये को जीत के आ रहे क्या? Yeah. Experience 11 years. November 19th, Soramia, we went back a decade. We went back a decade because this so-called experience, it did F all. I'm really sorry to say. When I had zero hopes from this team, I may as well send, Rinku. The sad part is, you were just talking about Rinku and Jaiswal. ये दोनों एक मैच भी नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप में. शुभमन गिल ओपन करेगा, जिसका रिकॉर्ड 3rd रेट है वेस्ट इंडीज में, जो अहमदाबाद के बाहर रन नहीं बना सकते हैं. ये ओपन करेंगे रोहित के साथ, 3 पे विराट, 4 पे श्रेयस, 5 पे केएल राहुल, 6 पे हार्दिक पांड्या, राइट? एंड सौम्या इज राइट व्हेन ही सेज कि यार एक आखिरी वर्ल्ड कप दे दो, 5 महीने की बात है. व्हाट विल 5 मंथ्स कॉस्ट अस? नथिंग, क्योंकि टूर्नामेंट तो हम वैसे ही नहीं जीत पाएंगे. इनके पेचेक तो आएंगे आईपीएल के 2 महीने से. But it is an injustice to the guys who've been doing the job, right? True. ठीक है, 5 महीने की बात है. But Rinku Singh is going to be wearing a yellow bib and giving drinks only because 2 players said, भैया हमको ये जीतना है. नहीं जीत पाओगे दोस्तों, नहीं जीत पाओगे. And that's the sad reality, Jamie. And that's why, as you mentioned, what these 5 months will do if Virat Kohli and Rohit Sharma will play, they'll cost crucial years of the youngsters. That this World Cup will actually rob these youngsters. It's just going to rob them of actually 5 months. So I get it. Soumya's got a point.
What is 5 months, right? वर्ल्ड कप नहीं आने वाला है. जब वर्ल्ड कप फ्रेंडली कंडीशन में नहीं आया तो घंटा वेस्ट इंडीज में आ गया यार. Did you see how these guys were struggling in the one days? ये one day series they barely won. They lost the T20 Suramiya. Yeah. So we don't have batsmen. आपको चाहिए रॉबमन पावल जैसा. हमारे पास है कोई रॉबमन पावल? मुझे तो नहीं दिख रहा. हमारे पास एंकर्स हैं. वही एंकर जो रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब एंकर्स की जगह नहीं है और आप 3 एंकर लेके जा रहे हो वेस्ट इंडीज. गॉड हेल्प यू यार. Yeah. You know, when T20 name comes in front of us, na, I mean, this is to everyone, whenever we say the T20 format, it actually reminds us of all those cricketers who are very aggressive and, you know, जिनको देखकर या सुनकर कहीं को भी डर लगता है यार कि ये बैटिंग करने ना आ जाए because they'll take away the match. If you see that kind of, or if you see the Indian team, you won't find a single name or you'll struggle to find names right now. I'm talking about the current scenario, the way Indian T20 squad is in today's time. Well, we'll take a lot of questions because we have been getting a lot of them from our viewers. But as we began this whole live session with a question that whether Virat Kohli deserves a place in the T20 squad or not, and then we went to discuss that who would you take in your T20 squad, Rohit or Virat. Soumya kind of said Virat because of the experience. Jamie said Rohit because of the power play and you know the conditions in the USA and West Indies for the T20 World Cup 2024. Davs, I didn't hear from you, Rohit or Virat. That was Shreyas Iyer. No, I'm all for Rohit for his attacking start. I mean, that is very crucial. Huh? Starts are very, very crucial in T20 cricket. अगर वहां पर गुची कर दिया, then you're going like you'll collapse big time. वो Jaiswal भी दे सकता है. Jaiswal Okay, so let's see. Okay, so we have our viewers. We have our viewers as our tiebreakers because Jamie and Taos are saying Rohit, Soumya and Kanav are saying Virat. Let's hear it out from our viewers, what they have to say. So I'm putting this question once again and would request our producer to flash it again on our screens. The question is that if given a choice between Virat Kohli and Rohit Sharma, who would you like to see in T20 squad for the T20 World Cup 2024? Okay. We had Ujjwal Maurya's comment. Let's take the comment and would request our producers to scroll that question also. Look at the scorecard, India versus Pakistan 2022. Surya ने पहली boundary मारी थी 4th over में. Virat was struggling midway. मुझे लगता है कि अब उज्जवल कह रहे हैं कि फिर उनका कहना यहाँ से ये होगा कि वो विराट को नहीं देखना चाहते. Isn't it, उज्जवल? तो उनके रिप्लाई का वेट करेंगे, तब तक हम ले लेते हैं. This innings of Virat, MCG only was a perfect example of what's right with Virat in T20 and what's wrong with Virat in T20I. उस इनिंग में हमने दोनों देख लिया. स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फेज था, दैट इज एग्जैक्टली जो विराट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है. दैट इज स्पिन एंड दैट इज चोकिंग. कभी कभार बाउंड्रीज नहीं आ पाती. हमने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा अभी 19 नवंबर को बाउंड्रीज नहीं आई और उस कैलिबर का प्लेयर अगर बाउंड्रीज नहीं निकाल पा रहा एक भी 100 बॉल्स तक, तो दैट इज कॉज ऑफ वरी. लेकिन वही विराट कोहली है जो उसी प्रेशर को ओवरकम करके एक वैसी इनिंग्स खेल के दे सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता. तो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट्स राइट विद विराट इन T20 एंड व्हाट्स रॉन्ग विद विराट. व्हाट्स रॉन्ग विद विराट इन T20. ओके, और जिससे मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था दैट यस विराट नीड्स टू चेंज हिज गेम. ही नीड्स टू प्ले दैट अटैकिंग क्रिकेट इन T20 एंड द काइंड ऑफ नॉक ही प्लेड इन द फर्स्ट टेस्ट मैच सेकंड इनिंग्स में, जिस तरीके की फ्री फ्लो अब मारना है वैसे खेलना पड़ेगा. लेकिन if you encounter a situation of that sort जो पाकिस्तान के अगेंस्ट आई, it is only Virat Kohli who can bail you out of that situation. This is what I'm saying. Change करो. Well, I'll attach another question to it. So, can Virat do it again and again? Can Virat do that thing again and again? Or are you saying that only Virat has the caliber to do it again and again? The mindset. So there's the mindset. Okay. Virat Kohli is the only person who can do it, and that is why he pulled off possibly the best T20 innings by an Indian batsman, right? Can you do it each time again? No, but even Sachin Tendulkar couldn't do, so that's fine. But what this presents is a bigger picture. That is that India are so dependent on chasing. आप एक्सपेक्ट करते हो कि हर बार विराट कोहली द चेसर, भाई
I have nothing to say. Brilliant. But विराट कोहली बैटिंग फर्स्ट में बहुत फर्क है. इंडिया पिछले 3-4 मल्टी फॉर्मेट वर्ल्ड कप्स देख लो, ब्लेम बहुत जल्दी बॉलर्स पे जाता है. इट्स एक्चुअली द बैट्समैन व्हिच हैव कलेक्टिवली नॉट डन द जॉब, राइट? बिकॉज जब पहले बैटिंग आती है, ये एक अलग टीम है. अगर आपको मेरी बात पे डाउट है तो आप नवंबर 19 देख लीजिए, पूरा आपको मिल जाएगा हॉटस्टार पर. अगर आपको उस पर यकीन नहीं है, अरे भाई वो तो वनडे था, आप 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देख लीजिए, आपको 10 विकेट से पेला गया, राइट? इंडिया स्टैंड probably a 65% chance of winning when they chase, but that's not how cricket goes. No, this team is हम बस chase करेंगे. In a chase, Virat Kohli will do it. What happens when Virat Kohli is batting first? List बहुत लंबा है. Different batsmen. Forget him. Why should I go after him? The Indian team wears a different look, a different color, right? So that is my problem looking at the West Indies and the conditions there. So yes, Virat Kohli is the best chaser. He will do it 10 times more than the next guy. But it's indicative to my view of a bigger problem. That is, हम chase कर लेंगे. अगर नहीं हुआ तो you've lost too many matches when you're not chasing. That's absolutely right. Very, very, very valid point. And I think with that, you've answered Ravi's question already, because he questioned that why no one is questioning bowling last two World Cups. And Jimmy's already answered that. No. I don't know. Sorry. I don't know what World Cup he's watching. Are you talking? The World Cup final. The World Cup final was lost because of the batting. The T20 World Cup semi-final was lost because of the batting. So I don't know what Ravi Singh is talking about. I think 5 of us can agree here कि in the last two things, bowlers, I mean, आपके पास run थे नहीं, ठीक है, bowling खराब थी दोनों मैच में, but there just weren't enough runs on the board. Same with the 2019. Yeah, it's just no. I don't agree with that comment at all. आपने अभी जेमी ने अभी वही तो बोला ना कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि बॉलिंग की वजह से हम हारे हैं मैचेस. तो सुरम्या, रोहित शर्मा 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद अब 10 विकेट से हारे. रोहित ने क्या बोला? या बॉलर्स कुड हैव डन बेटर. बताओ यार, शर्म की बात है यार. Okay, Kuldeep's asking your tagline should have been Rohit Sharma. Okay, whether Rohit Sharma deserves a place or not. I think we've discussed this throughout our live show. हमने काफी बार इस पर बात कर ली है, and all our panelists have given answer to that question. We'll go to the next one. उज्जवल कह रहे हैं 10 ओवर से पहले T20 में हर बॉल पर मारने की जरूरत नहीं आनी चाहिए, 10 ओवर्स के बाद ही ये सिचुएशन आनी चाहिए. अब ये सिचुएशन तो ये तो एक कैसा कमेंट उन्होंने दे दिया है. वेल यही अप्रोच से ट्रॉफी आएगी. लेकिन 8 से 9 का विकेट लेके चलो ना. अब उसमें बाउंड्री पे आना या 4 बॉल में 4 डबल लेने, वो अब बैट्समैन के ऊपर है. Also, it's about catching up. It's about catching up because this is not the kind of cricket, Ujjwal, that the other teams are playing. आप 10 से पहले आराम से खेलो, वो 10 से पहले 100 बनाकर वो आगे बढ़ जाएंगे. तो it's not that you have to do something new और आप 10 से पहले मारना शुरू करो. सब ऐसा kind of T20I cricket, especially the likes of England and Australia, they have developed a cricketing system in T20I when they go for it from ball 1. तो आपको वो कैचअप करना पड़ेगा. आप इस अप्रोच से खेलेंगे तो फिर तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो दूर की बात है. अब लीग स्टेजेस में नेपाल ओमान जितने से जीत जाए वो काफी हो जाएगा. एग्जैक्टली. ये जो माइंडसेट है वो ओडीआई का माइंडसेट है. आई मीन यू हैव टू चेंज. हमको सिर्फ गेम, हमको माइंडसेट चेंज करना, जो अग्रेशन लाना है, जो आप इंटेंट की बात कर रहे हो वो यहाँ पर लाना है. तो आपको सिर्फ ओडीआई माइंडसेट से नहीं खेल सकते T20. That's right. Next comment, please. Kuldeep saying everyone saying pitches in West Indies are slow. तो भाई ये इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वाले मैचेस कहाँ हो रहे थे जहाँ हर मैच में 220 से ऊपर रन बन रहे थे? I'll take this one. I was just having this discussion yesterday with a very big cricket writer. The same thing was thrown in my face, and I was zapped with this argument. Look at this. This tournament was an anomaly. It was an anomaly because the two teams are going extra. The England team, which got themselves their backside served to them on beans and toast format, they had a point to prove. And West Indies, who didn't qualify for the T20 World Cup, for the One Day World Cup, they had to make a statement. आपको बस इंडिया सीरीज देखने की जरूरत है, जो इससे पहले सीरीज थी. हाई स्कोरिंग नहीं होगा.
इस वहम में मत आओ कि वहां होने वाला है. दिस वाज अ फ्रीक सीरीज जहां पे 200 बहुत आसान से हो चुका है. ये वर्ल्ड कप में नहीं होने वाला है. One series, the pitches there have not changed. This was two desperate teams trying to make a statement. This is West Indies coming back and saying, "Boss, हमें serious ले लो." So, with all due respect, Kuldeep, look at the last 4 or 5 tours. Forget India. Look at all the tours. No score was going past 180, 185 in all those tours. Yes. Taus, you want to say something? Exactly, और होते होते, I mean, you might see a 200 plus in the initial stages before it takes the natural shape that what West Indies cricket, West Indian wickets offer. So it's going to be slow. I mean, turn होगा थोड़ा slow होगा. Almost India wicket जैसे Indian wickets होती. By the way, Virat Kohli and Rohit Sharma, they enjoy playing in West Indies and in Australia and uh, South African conditions. अगर ODI या limited overs यहाँ पर सबको struggle होता है यार. Difficult to hit. Okay. Next question, please. Again, Ujjwal, he's saying जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे तब तक खेलेंगे. देश के लिए नहीं, खुद की लेगेसी के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं. दिस इज वेयर प्रॉब्लम लाइज. इस पूरे लाइव शो में उज्जवल यही बात हुई है एंड कैन आई सेट दैट लाइन कि कैसे आपका हंगर अब डेस्परेशन में बदल रहा है क्योंकि आपने 2023 का ट्रॉफी नहीं जीता तो अब आप चाहते हैं कि हम 2024 में एक ट्रॉफी जीते. अगर आप 2024 में ट्रॉफी नहीं जीतेंगे ओनली दे एंड गॉड नोज व्हाट दे वांट टू डू. शायद वो अगले फिर वर्ल्ड कप में सामने आएंगे तो शायद ये सिलसिला चलता रहेगा. हु नोज उज्जवल, शायद these two players no. सौम्या, yes. 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में सामने 25 की चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं जीते ना तो सौम्या आपको देखना होगा कि वो अगले वर्ल्ड कप में भी आपको नजर आएंगे चाहे रन्स बना पाए या ना बना पाए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, this is a very anonymous question. KL Rahul dropped for shocking way. Sanju is tried, failed. Okay, tested, tried and failed. Jitesh is too early. Rohit crumbled team. Which drop catch he's talking about? Which drop catch? No, he's saying KL Rahul. No. KL drop जोक मार. KL Rahul के ड्रॉप नहीं हुए. हमने कल 1 घंटे का शो किया. सबको पता है वो आ रहे हैं मई के महीने में. KL Rahul के ड्रॉप नहीं हुए भाई. अच्छा, तो केएल राहुल का ड्रॉप नहीं है. केएल राहुल तो आपको नजर आएंगे. साहिल ने कल बताया था कि किस तरीके से केएल राहुल ने आईपीएल की अपनी टीम तो सेट कर ली है. वो मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते हुए नजर आएंगे आईपीएल में. फिर अब वो आपको टीम में भी नजर आएंगे, भारतीय टीम में. That would be the final nail in the coffin. So now here lies the point. Now जो हम रिंकू सिंह और जो हम तिलक वर्मा और जो इन लड़कों की बात करते हैं ना, that is the problem. कि अब केएल राहुल ने अपने को मिडिल ऑर्डर में फिट कर लिया तो वो इंडियन टीम में मिडिल ऑर्डर खेलेंगे तो भाई मिडिल ऑर्डर में लड़के कहाँ खेलेंगे ये यंग. दैट इज द प्रॉब्लम. वो नहीं खेलेंगे. वो उन लोगों ने अपने आप लड़के तब खेलेंगे. रोहित शर्मा विराट कोहली का डिस्कशन हम कर रहे हैं. रोहित शर्मा किसकी जगह ले रहा है? ज्यादा से ज्यादा एक जायसवाल की. और विराट तो किसी की जगह ले नहीं. सूर्य एंड विराट में स्वैपिंग होगी ना. दैट्स इट. जो डेजिग्नेटेड सूर्य नीचे बैट कर लेंगे. केएल राहुल बोलेंगे मेरे को भी आना है. एग्जैक्टली दैट इज द प्रॉब्लम. देखो प्लेयर्स फिर जाडेजा भी कभी देखो प्लेयर्स का इंडिविजुअल ड्रीम्स होता है यार. इंडिविजुअल ड्रीम क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं वो सेल्फिश माइंडसेट या एक नॉर्मल माइंडसेट ह्यूमन बीइंग की तरह सोचेंगे हमको खेलना है, खेलते रहना, हमको वर्ल्ड कप भी खेलना और जीतना भी है. बट ये आपके सिलेक्टर्स और बीसीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे कन्वे करें भाई आपकी वक्त आ गया, आप लोग जाइए, अलविदा, हमको जीतना है वर्ल्ड कप, तो हमको यंगस्टर्स को खिलाना. ये प्लेयर्स तो लगे रहेंगे यार. उनको कितना भी आप नहीं खिलाओ, कितना भी खिलाते रहो, खेलते रहेंगे. 50 तक खेलते रहेंगे. ये आपको डिसाइड करना है, सिलेक्टर्स, बीसीसीआई. एंड दूसरा बात ये एक मैं कहना चाहूंगा, मैं भूल गया, अब बाद में बात करूंगा. सनी का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. सनी, आपके क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो कल के लाइव शो में मिला था एंड आई वुड लव टू आंसर दैट. सनी इज सेइंग डिड सिलेक्टर्स रियली वांट टू क्रिएट अ न्यू टीम और दे जस्ट सिलेक्टेड द यंगस्टर्स बिकॉज द सीनियर प्लेयर्स वर मेड अनअवेलेबल एंड सिलेक्टर्स डोंट हैव एनी स्पाइन टू मेक बोल्ड स्टेप्स नाउ. नेटवर्क 18 ग्रुप स्पोर्ट्स एडिटर के श्रीनिवास राव ने कल इसका आंसर दिया था. उन्होंने बोला था कि जो सिलेक्टर्स है, चलिए ये बात तो खत्म हो ही गई कि दे डोंट हैव द स्पाइन टू मेक चेंजेस. तो उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या चेंज होना चाहिए, लाइक अगर बीसीसीआई कुछ चेंज कर सकती थी क्या कर सकती थी. तो उन्होंने कहा कि एक चेंज कर सकते थे कि चेतन शर्मा को वापस ले आते बिकॉज एटलीस्ट कुछ तो स्पाइन थी. अब इनमें तो स्पाइन ही नहीं. ये उनका जवाब था. अब आप
वो लाइव शो आप वापस देख सकते हैं सनी. And I would like our producer to paste the link in the chat box क्योंकि you'll get the right answer of your question in that video. Sunny आगे लिख रहे, it doesn't matter whether young team win or lose, you need to start somewhere. I've enjoyed this young new team throughout the year. Sunny, everybody agrees with you. Here, all our panelists have said the same thing through and through, and they're saying this from past couple of days. So we all agree with you that अगर change करना था तो आपको उस change को back भी करना चाहिए था जो आपने पूरे एक साल में किया है. Next comment, please. Sony Upendra Singh, what is wrong in Surya as a captain? He did well in last two series. So Sony का question ये है कि आप सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दीजिए T20 टीम का. Kana, what are your thoughts? There's nothing wrong, but there's a hierarchy for me. Pandya, if Pandya is not fit, Surya Kumar Yadav. If Surya Kumar is not fit, I'll go with Shreyas Iyer. ये कैप्टनसी के गाब में रोहित शर्मा वापस लाना कि वी डोंट हैव अ कैप्टन तो रोहित को बना देते. इफ यू आर गोइंग विद अ यंग टीम माइट एज वेल. कल भी आई थिंक श्रीनी वाज सेइंग कि क्या लॉस होगा अगर आप एक यंगस्टर को कैप्टन बना दे. आप यंग टीम लेके जाएं, आप एक यंगस्टर को कैप्टन बना दीजिए. सिर्फ एक कैप्टनसी के लिए अगर आप रोहित शर्मा वापस लाएंगे तो देयर इज नो पॉइंट. सो आई कंप्लीटली एग्री, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद सूर्या एज कैप्टन. हाँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनको कैप्टनसी का, इसलिए आई वुड प्रेफर अगर पांड्या फिट हो तो ऑब्वियसली ही लीड द साइड. ही हैज बीन लीडिंग द साइड अगर जब वो फिट रहे हैं. एंड ही इज touted as the next white ball captain for India and he is the future. बोला जाता है उनको कि रोहित शर्मा के बाद वही white ball में succeed करेंगे as captain. So for me, Hardik, Surya, beat Shreyas Gill, I don't care, but going back to Rohit was always a bad option. Okay. I just to add one thing here. I just feel okay, Hardik and Surya are out because of injuries. ठीक है. श्रेयस का मुझे पर्सनली जो एक लॉजिकल रीजनिंग लगता है उसका, क्योंकि ही विल बी प्लेइंग द रणजी ट्रॉफी गेम स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of January. Then you have a test series coming up from 25th January, right? Against England. So probably the selectors want him to be in that groove of days cricket. You know, just have a taste of it, just be in there. So probably that's why he's not in this squad. That is the only reason I am feeling he's there. He's not there in this squad. Baki, BCCI and the logics. Jason का भी इस पर कुछ comment है. Jason कह रहे हैं, please not Sky with captaincy. He'll pick the worst day to prove all of us wrong. He's saying that it'll take only one day for Surya Kumar Yadav to prove us wrong. Okay, let's move to the next one. I agree to what just Jason said. Okay. Oh, a lot of questions around captaincy. मुझे लगता है सब players के नाम आ जाएंगे जेमी यहाँ पर. अब बुमराह as a captain. बुमराह को अकेले छोड़ दो. पांड्या भाई 10 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं अपनी जिम में. I'll combine all the names क्योंकि बहुत सारे questions है जेमी कैप्टन को लेकर ना, और बस नाम बदलते जाइए आप. सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, देन यहाँ पर अभी किसका, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत. I want to ask, who is the vice captain of this squad? Who is the designated vice captain? है नहीं. पिछले तीन सीरीज में, सॉरी 2 सीरीज में आप 3 कैप्टन और 3 वाइस कैप्टन. सीरीज 2 कैप्टन 3 वाइस कैप्टन 3 और ये तीसरा सीरीज कैप्टन 1. ये जून 29 के आगे कोई नहीं सोच रहा है बीसीसीआई के अंदर. Yeah. वो 11 को पता चलेगा वाइस कैप्टन, जब टॉस पे टीम शीट आएगी तभी पता चलेगा वाइस कैप्टन. Yes. चलिए next question. Dev Pratap Singh Chauhan लिख रहे हैं, Sky, Rinku and Jaiswal are 3 players who match the modern day T20 template. Both Rohit and Virat are outdated. Okay, point taken. हमने काफी ज्यादा बातचीत कर ली है इस पे और आपने हमारे लाइव शो देखा भी होगा. Next question please. Ravish, what they have done in pressure situation, what Sky has done. Only Virat and Hardik, they have been always, I don't know. What is he trying to say? Sky has done in pressure situations. Only Virat and Hardik have stood up in pressure situations. That is what my reading of the question. Yeah, that probably. Yeah. Probably, yeah. Okay, so Soumya, what do you think about it? I've explained this in at length in this live session itself. Yeah, we have. When it comes down to pressure situation, Virat is somebody who will stand up. But again, my only concern is batting first. Yes, Jamie was right. Batting first, उनको अपना gear बदलना पड़ेगा. He will have to change his game plan, and we are pretty good to go still with Virat Kohli.
And yes, Sky has choked in pressure situations. I just remember is one of his knocks where he scored something 26 not out of 31 against New Zealand. वहां भी वो एक ड्रॉप हुए थे, एक बार ड्रॉप हुए थे अगेन, दैट हैपेंस, बट ही टुक अस ओवर द लाइन. तो मुझे कोई ऐसी कोई बैटिंग सेकंड कोई ऐसी सीरीज याद नहीं आती जहां स्काई ने ही हैज टेकन अस ओवर द लाइन कोई मेजर मैचेस में अंदर. बट अगेन ही इज समबडी हु इज who's the finest batsman in T20 cricket, and he will walk in whenever he is fit in the 11. So no debates about that. I don't think so. Okay. Next question. This will be the last question of the day. Can we have the last question, please? Okay, this is from KK. He's saying everyone's talking about Rohit and Kohli. No one's talking about the tail enders, the last four. And they can neither make 12 of 12 or nor 20 runs extra if team bats first. Okay, he's saying that we don't have all-rounders, and or he's saying that we don't have bowlers who can bat. तो ये तो हाँ, मतलब टेल एंडर्स हाँ बैट नहीं कर पाते हैं. ये तो बहुत समय से प्रॉब्लम है ना ताउस. ये तो आज की प्रॉब्लम नहीं है. ये तो पता नहीं हम कब से डिस्कस कर रहे हैं. क्योंकि आप बाकी सारी T20 टीम्स उठा लीजिए दूसरे कंट्रीज की, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे आपको दिखेंगे टेल एंडर्स आएंगे आपके और मैच जिता कर जाएंगे. पर इंडिया में जैसे ही आपके टेल एंडर्स आए, लोग उम्मीद छोड़ देते हैं. दे नो यहाँ से हमने मैच जीतने वाले. Absolutely, that is the beauty of cricket, world cricket. Every team has its own strength. हमारी टीम है एंकरिंग करना, वेस्ट इंडीज टीम है पावर प्ले, पावर गेम खेलना, ऑस्ट्रेलिया का अलग ही एथलीट वाला गेम है. एवरी टीम हैज इट्स. आई मीन दिस इज वेयर एग्जैक्टली, आई मीन यू हैव टू हैव अ T20 माइंडसेट. आपको कंप्लीटली सेपरेट T20 टीम बनानी है. आपको डोमिनेट करना है तो आपको वेस्ट इंडीज से बोरो करना, ऑस्ट्रेलिया से बोरो करना, इंग्लैंड से बोरो करना, जो आप नहीं करते. अब वही चिपका देते जो आप ओडीआई में यूज करते, वही चिपका देते जो टेस्ट क्रिकेट में यूज करते, वही फॉर्मेट आप T20 क्रिकेट में यूज करते. और दैट इज वन ऑफ द रीजंस. आपका जब तक कि सिलेक्टर्स में अग्रेसिव माइंडसेट नहीं आएगा या एक सोच नहीं आएगी कि हमको एक पर्टिकुलर विजन के साथ, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या एक एक फॉर्मेट पैटर्न के साथ जाना T20 क्रिकेट के, तब तक ही कुछ नहीं होना. सी एवरी पैटर्न इज डिफरेंट, तो आपको वैसे सोचना है. एंड जब आप मिक्स एंड खिचड़ी बना देते हो और जम्बल अप कर देते हो ना, तो ऐसी खिचड़ी बनती रहती है. वेल, खिचड़ी तो बन चुकी है. आपको देखना होगा whether this is a tasty one, this is a one to be relished or not once we'll get into that T20 mode from 11th of January. खिचड़ी is more for people who know well, बिरयानी and पुलाव ये सब खाना चाहिए. बिरयानी पुलाव तो मिल ही नहीं रहा है ना इस T20 स्क्वाड के साथ. खिचड़ी में ही अगर थोड़ा सा आप देखें कि अगर टेस्ट आ जाए तो फिर भी ठीक है. फाइनल के जो रैम शॉट्स थे वो बिरयानी थे ताउस भाई. I rest my case. Okay, chaliye, so we started on this live session with a question, and I'll end it with the same question that you can one see thing on the screen. I like to say before we part ways, the bottom line of all these debates we have been doing for the last 2-3 days is only the injustice that has been done to the youngsters. Yeah. There's obviously nothing against Virat, nothing against Rohit. These are two stalwarts of the game, and we all love the contribution that they have done for Indian cricket, and they'll continue to do in ODI and Test cricket. But this is a format that they have left past behind them, and the team collectively needs to move forward. The only part where we feel wrong is that 2022 के सेमीफाइनल के बाद they left the door, but उन्होंने अपना दरवाजा बंद नहीं किया, दरवाजा खोले रखा, and they use the youngsters as stoppers. वो यंगस्टर्स को स्टॉपर्स की तरह यूज करके अपना दरवाजा खुला रखा गया, और एक साल बाद वापस आके उन यंगस्टर्स को हटा के साइड कर दिया गया. दैट इज वेयर यू आर सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंट फॉर द यंगस्टर्स आगे आने के लिए. बिकॉज जो मैंने 1-2 लाइव पहले कहा था कि आज का इंडिया के यंगस्टर अपनी परफॉर्मेंस से भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा. ही हैज टू वेट टिल द सीनियर्स रिटायर. टेस्ट क्रिकेट में यंगस्टर को रणजी पे एक ध्यान होता है कि कहीं पुजारा और रहाणे रन तो नहीं मार रहे, क्योंकि वो मारेंगे तो वो वापस आ जाएंगे. सेम विद द वाइट बॉल फॉर्मेट. आपके 2 स्टॉलवर्ड्स 1 साल से बाहर थे, यंगस्टर्स आए, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने रन मारे, उन्होंने अपनी जगह पक्की की, एंड ऑल इट टुक वाज 1 सेकंड. ये हमेशा से होता है. एक तरफ रणजी ट्रॉफी पे नजर रहेगी क्योंकि आप 1 सेकंड 3 नंबर पे आपने आके कुछ नहीं करा 4 इनिंग के अंदर. That's it. इसलिए आपकी नजर. That's what I am saying कि in spite of that, इस केस में रेड बॉल में they have not performed, but I am talking about white ball. They have performed. They have made a space for themselves.
हाँ, आई एम सेइंग रेड Okay. बॉल में भी ध्यान होता है, बट इन आज रेड बॉल में जो प्लेयर्स अभी हैं उन्होंने ओवरसीज रन नहीं मारे, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। पर व्हाइट बॉल में उन्होंने एक साल में अपनी जगह पक्की की है, तो द ओनली बॉटम पार्ट ऑफ ऑल दिस इज दैट इट्स अनफेयर फॉर देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली देयर इज नथिंग अगेंस्ट विराट एंड रोहित, दे आर द ऑब्वियसली टू सीनियर प्लेयर्स हु हैव डन immensely for Indian cricket over the years and will continue to do so. Oh, that's completely right, Kanav. जहाँ पे आप बात कर रहे हैं that Virat Kohli and Rohit Sharma have been really good in the Indian cricket system, and they have done a lot for the Indian cricket. But where are the trophies? That's a big question. After the 2022 disappointing show, the Indian team promised that they'll be undergoing transition and they will be making the desired changes in the team. But here we are in 2024 with almost similar squad that we saw in 2022, and we're expecting that in 2024 we'll be seeing only a few changes in the team. Other than that, we'll be seeing all the same players that participated in the 2022 वही टॉप World सिक्स Cup. वही टॉप सिक्स होगा वही टॉप सिक्स होगा and that cannot be the way forward, unfortunately. Exactly. Well, we started this conversation around Virat Kohli, his position in the T20 squad, whether he should be there in the squad or not. And I'll end this live show with the same question, that if you are given with the choice that you can choose either Rohit Sharma or Virat Kohli in your T20 squad for the T20 World Cup 2024, who it would be. You can share your answers with us in the comment section, or you can also tag us on our various social media handles. For now, thank you so much, Jamie, Taus, Kanav, and Samir, for joining with me. And thank you so much, everyone, for your questions. Please join us every day at this same time, because we love the way you share your opinions with us. And it's great to always interact with all our viewers. Thank you so much again. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।